Thank you so much, and thank you everyone for joining us on this book launch. A very big day for a young author, and so what we'll do is I'll start. We'll do a discussion and then open up the floor for a few questions. Prarthana, you know, writing at 17, your school, your exams, people are still trying to get time for those things, but yet you wrote a book. I mean, what was the inspiration? How did it, what was the process? How did it happen? So I wanted to write a book because when I was interviewing a lot of very eminent personalities on my YouTube channel, I had a lot of perspective and thoughts and learnings जो मैं उनसे सीख रही थी मैं सबके साथ शेयर करना चाहती थी तो I just started writing it down and then it we compiled basically it's a compilation of my thoughts and learnings from all the people I interviewed and what I learned from them and I started writing it जब मैं class 11 में थी और अब मैं school खत्म कर चुकी हूँ पर हाँ मैं school करने के बाद ऑनलाइन school और जो ट्यूशन होमवर्क करने के बाद रात को लेट तक जाके उसको लिखती थी दैट्स द ओनली वे मैं कर पाई क्योंकि कॉलेज एप्लीकेशंस भी भरने थे पर हाँ तो I knew it was something I wanted to do so I prioritized it and made time for it because it was something I really wanted to pursue so I just made the time for it because if you want it then you can do it. I wish I had this kind of discipline. Sakshi, आप एक इंस्पिरेशन हो यंगस्टर्स के लिए यूथ के लिए तो आपका एडवाइस क्या है यंगस्टर्स के लिए जैसे प्रार्थना जैसे लोग 17 साल में किताबें लिख रहे हैं व्हाट इज योर मैसेज व्हाट्स योर एडवाइस टू देम सबसे पहले तो प्रार्थना को कांग्रेचुलेशंस 17 की एज में उतना उसने बुक लिखी है और एक मोटिवेशनल बुक है होगी आई थिंक मैं भी ज़रूर पढ़ना चाहूँगी तो बिल्कुल और मैं यही एडवाइस दूँगी कि मेरे आगे एग्जाम्पल है 17 ईयर्स में बुक लिखना और अभी तो इसके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है कि आगे ये बहुत और अच्छा कर सकती है किसी भी फील्ड में हो आपको काम करना चाहिए आपको आपका जो भी सपना आपका जो भी गोल है आपको उसको पूरा करने के लिए आपको अपना पूरी मेहनत पूरी लगन और ईमानदारी से अगर आप उसके लिए काम करोगे तो आप 100% अचीव कर सकते हो जैसा मेरा है मेरा सपना था मेरा स्टार्टिंग में तो सपना था हवाई जहाज में बैठना ओलंपिक्स का तो पता ही नहीं था कि क्या ओलंपिक्स हैं बस पता चला था कि इंडिया में फर्स्ट आऊँगी तो हवाई जहाज में बैठने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले तो वही सपना था वो जल्दी पूरा हो गया फिर पता चला कि ओलंपिक्स हैं जो सबसे बड़ा एक एथलीट का सपना होता है तो मेरा वो सपना बन गया और उसकी मेहनत करने के लिए मैंने अपना दिन रात एक कर दिया मुझे कुश्ती के अलावा कुछ नहीं दिखता था पेरेंट्स कहीं ले जाते थे तो भी ऐसा लगता था कि बस मेरी ट्रेनिंग मिस नहीं होनी चाहिए मैं लड़ने लग जाती थी घर वालों से कि मुझे ट्रेनिंग टाइम पे पहुंचाओ तो मेरा मेनली कहने का मकसद यही है कि आपको पूरा डेडिकेशन डिसिप्लिन से अगर आप जो भी काम करोगे ना आप 100% अचीव कर सकते हो और एक बार फिर से मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस और एज का तो मुझे अभी पता चला सीरियसली इट्स वेरी प्राउड थैंक यू सो मच Prarthana, you have chosen some people for your book and you ran that YouTube series before that's where you got inspired from. How did you finally choose who will be part of this book? Was it tough for you to decide who to keep out, who to keep in? So even while interviewing people for my YouTube channel मैंने उन्हीं को चुना था जिन like they are all fields that I look up to और जिनको मैं बहुत respect करती हूँ जैसे journalists, chefs, sports people and the other two journalists and sports people is something I still feel कि मैं कर सकती हूँ but sports is something जो मेरे से होता नहीं है so I respect it even more because of that so I chose it only because where my natural interests were and उनसे जो भी मैंने सीखा I wanted to include everyone who I learned something impactful from in my book, so that's how I chose. I included almost everyone. There's not really people that who I left out. So from your perspective, since you are from the Gen Z, what drives them according to you? We all want to hear that story. Well, according to you, what's your observation? I mean, I think it's the same for all generations. Though
passion जिसको भी जो whatever there's something that someone's passionate about, they will work towards it. Like ma'am said, she was passionate about wrestling, तो उन्होंने भी उसके towards मेहनत की. I was passionate about writing, तो मैंने उसके towards मेहनत की. It's I think whatever each person's passionate about, they'll work towards it. साक्षी, Even if it's hard. right. साक्षी, आप बोल रहे थे मतलब आप डिसिप्लिन थे, आप चाहते थे कहीं भी हो आपकी ट्रेनिंग मिस ना हो. मोटिवेशन कॉन्स्टेंटली रखना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, यू नो. एक बार दो बार बट लगातार इसको करना, आप कैसे इसको, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड ऑल द टाइम? जैसा मैंने बताया कि मुझे पता चला कि ओलंपिक्स है तो वो मेरा गोल बन गया था और रेसलिंग से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था और है भी, तो वही मुझे मोटिवेट रखता था हमेशा कि हाँ मुझे करना है, मुझे रोज़ रोज़ मेहनत करनी है, ज़्यादा मेहनत करनी है, अपने अपोनेंट्स से ज़्यादा मेहनत करनी है. और जैसे छोटे छोटे टूर्नामेंट्स में मैंने खड़े होकर मेडल जीता है और वो फीलिंग जो मैंने महसूस की है तो वो मुझे एक बड़े स्टेज पे फील करनी थी, तो वो चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट करती रही कि हाँ तुझे भी ओलंपिक पोडियम पे खड़ा होना है और मेडल जीतना है. Wonderful. Prarthana, one of your missions, you know, is to make this world a kinder place. I mean, give us a sense of what you mean by that. How are you planning to do that? I mean, I don't think it's that complicated. Just be nice to people. I mean, especially after we've seen such a long, strenuous pandemic, so many people have suffered loss, and I think it's changed the way everyone thinks because everyone has their own like mental battle that they are fighting. So just be nice to people. It's not that hard to just जिसको भी देखते हो greet them with a smile, अच्छे से बात करो, be respectful. It's not that complicated, and I think then the world will be a kind of place. तो बुक्स की बात हो रही है, ऑथर्स की बात हो रही है, तो पहले मैं आपसे पूछूंगा कि who do you look up to when it comes? Who are your favorite authors? So even though this is, I would say, a slightly more serious book, but जब मैं अपने free time में किताबें पढ़ती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा serious books नहीं पढ़ती. Half the time I read to gain knowledge from it, but half the time I'm reading just to have fun, get lost in a storybook. Not storybook, but to get lost in a story. जैसे लोग टीवी देखते हैं मजे के लिए, मैं किताब पढ़ती हूँ मजे के. तो there are a lot of authors I like. One of my favorite authors, I read a book. It's called Atomic Habits, and it's by this author named James Clear, and it's just about building habits that help you like fulfill your whatever you want this to do in life. It's just about building sustainable habits. So that's one of my favorite books that I recently read. Sakshi, I'm sure you have a very hectic, schedule, but आपको टाइम मिलता है किताबों के लिए कभी क्या? और आपके फेवरेट ऑथर्स कौन हैं? मेरी इच्छा है बुक्स पढ़ने की. मैं जैसा कि बताया कि टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि इतना टाइट शेड्यूल होता है. सुबह मॉर्निंग ट्रेनिंग, फिर समटाइम्स 3 बार ट्रेनिंग होती है, दिन में एक सेशन, फिर इवनिंग 4 बजे फिर एक सेशन, और बीच में सोना भी है, डाइट का भी ध्यान रखना है. तो ज़्यादा बुक्स तो नहीं पढ़ी, लेकिन मेरी फेवरेट बुक द सीक्रेट है जिसने मेरी लाइफ में बहुत हेल्प की है आगे बढ़ने में, और क्योंकि उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और अपने गोल को अचीव करने में उस बुक ने मेरी बहुत हेल्प की है. बाकी मेरी इच्छा है कि जब रेसलिंग करियर मेरा ख़त्म होगा तो उसके बाद मैं ज़रूर बुक्स पढ़ना स्टार्ट करूँगा. एक सवाल लास्ट पूछूंगा, फिर कुछ ऑडियंस क्वेश्चंस लेंगे हम. प्रार्थना, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल योर पीयर्स, आपकी जो इस ग्रुप में है, आप उनको क्या बोलना चाहोगे? कि आप जो भी करना चाहते हो, work hard towards it and you will achieve your goal. I mean, I don't think I've achieved my goals. It's just the start. But if you are passionate about something and you work hard towards it, then you will achieve it. Because this also, it was like, जैसे मैंने पहले बोला, it took a lot of time out of my fun time, क्योंकि मैं स्कूल और कॉलेज का काम खत्म करने के बाद रात को ही बैठ के देखती थी, तो मैं कम सो रही थी, इतनी एनर्जी नहीं होती थी, पर मुझे करना था तो मैंने कर लिया स्कूल के बीच में. Wonderful. And साक्षी, आपसे आखिरी सवाल, अगर आप रेसलर नहीं होते तो? सर, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और
जैसा सबके साथ होता है, मेरी शादी हो जाती और बच्चे होते हैं और एक नॉर्मल सी जॉब पे होती, तो मैं लकी हूँ कि मैंने रेसलिंग चूज़ किया और मैं लकी हूँ कि मैंने अपने देश को प्राउड फील करवाया और इतने बड़े स्टेज पे मैंने अपने देश का जो झंडा है वो लहराया। आपका मैसेज यंग यूथ जेन ज़ी के लिए आपका क्या मैसेज है? यूथ के लिए जैसे प्रार्थना ने बताया कि सेम ही है, उसका अपना था, उसने बताया कि वो रात भर सोती कम थी, अपनी बुक लिखती थी। वैसे सेम मेरा है, किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स में हो या कोई भी फील्ड हो, तो आप अपना लगन मेहनत आप बिल्कुल टाइम निकाल सकते हो अपने गोल के लिए, चाहे टाइम ना भी हो, लेकिन जो चीज़ आपको करनी है और जिसके लिए आपको पैशन, आप प्यार करते हो जिस चीज़ से, वो आप ज़रूर उसके लिए टाइम निकाल सकते हो और आप अपना गोल 100% अचीव कर सकते हो। Wonderful. So अब हम कुछ questions ले सकते हैं. We can take some questions. Yes. Okay. Anand ji, our colleague, has a question. Whoever wants to ask a question, they can raise their hand or you get the mic. Very good evening, Sakshi. Agree. मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपके ऊपर किताब लिखी जाए तो आप किससे लिखवाना पसंद करेंगे, और अगर आपके ऊपर फिल्म बने तो ऐसी कौन सी एक्ट्रेस आप चूज करना चाहेंगे जो आपके किताब है? सर बुक्स का तो ये प्रार्थना अच्छे से बता पाएगी कि कौन ज़्यादा अच्छा लिख पाएगा मेरे ऊपर। बाकी एक्ट्रेस कोई ऐसा स्पेशल नहीं है क्योंकि नॉर्मली मूवीज में देखती हूँ तो सभी एक जैसी ही लगती हैं, कोई बनाए मेरे ऊपर मूवी बनाओ। There's a question. Hello ma'am, hello sir. I'm Shreya Agarwal from 10 News. So my question is for Prarthana. Prarthana, so when you were writing your book, so what was the most challenging phase that you came across? So when I was writing the book, like I said, it's basically what my thoughts and learnings are. तो मैंने कभी किताब पहले लिखी नहीं है, तो I didn't know how to make it in the format of a book and like that flow of thoughts to come, because it was just like मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसको किताब में बनाऊंगी. The idea came after that YouTube channel. So the hardest part was like putting it in the format and finding that flow of thoughts, because I had no क्योंकि इसको फॉर्मेट में कैसे डालेंगे और लाइक किताब के फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अदरवाइज इट वाज जस्ट लॉट ऑफ स्कैटर्ड थॉट्स दैट आई हैड. Thank you. Any other questions? Yeah, any questions? प्रार्थना, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने रेस टू सक्सेस की बात करती है, तो आपके लिए सक्सेस का की क्या है? आपके लिए सक्सेस की कुंजी या चाबी क्या है? जैसे मैम ने भी बोला, बस मेहनत करना, क्योंकि उसके कोई शॉर्टकट नहीं होता है. अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो आई थिंक उतना ही है फॉर एवरीवन. मैं ये जानना चाहूँगा कि बड़े होके आप भी पापा की तरह पब्लिशर, एडिटर और जर्नलिस्ट ही बनना चाहेंगे? नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्या बनना चाहती हूँ. तो अभी तो मैंने सिर्फ स्कूल ख़त्म किया है, तो मैं कॉलेज में अपनी पसंद के सब्जेक्ट पढ़ूंगी और फिर देखूंगी मैं क्या बनना चाहती हूँ. मुझे नहीं पता अभी. लाइक आई एम ओनली 17, सो आई डोंट नो एट दिस एज. Yeah, there's a question. Good evening, all of you. I'm Gajanan Mali, founder of the 10 News Network. My question to Prarthana, to whom you would like to dedicate this book? To my family and to my mom especially, because she used to help me, like that उनको पता था कि मैं रात तक जागती थी और ये किताब लिखती थी और मुझे मोटिवेट करती थी लिखने पे. तो टू माय मॉम सबसे ज़्यादा, एंड माय नानी, बिकॉज मेरी नानी आज यहाँ पे है नहीं, पर उन्होंने भी, मेरी नानी ने 6 किताबें लिखी हैं. तो टू माय मॉम एंड माय नानी. Among the youth icons of India, to whom do you treat your your youth most favorite youth icon? Tough question. बहुत सारे हैं. You can name, please. There's a lady. Let's have one from. Hi Prarthana, hi Sakshi. The question is for Prarthana, myself Urvashi Khona from NewsX. The question goes,
amidst of Gen Z world, I mean the whole Gen Z generation that we are talking about, it's more of easy way out. And you've given the mantra of hard work. That seems to be not so easy for Gen Z, at least in the environment that right now we are seeing. So how is it that you feel that this is gonna work out in a better way for Gen Z? I mean, I disagree. I don't think this generation takes the easy way out. But I think we also do work hard to achieve what we want. But I think it is a little easier because we have more resources and technology available to us. So it's easier and more efficient to get there. But that's just our luck for being born in a generation and age with technology. But I wouldn't say it's like we take the easy way out. Brilliant. We can take, right? Okay, there's another lady at the back. एक सवाल मेरा है हाँ जी। राम किंकर सिंह हूँ आज तक से प्रार्थना से सवाल है आज साक्षी जी आपके पास बैठी हुई हैं तो इन्होंने जितने रिकॉर्ड तोड़े तो क्या आपको लगता है कि ये जो बुक आज आई है ये भी उसी तरह से रिकॉर्ड तोड़ेगी जैसे साक्षी ने तोड़े? I mean, I hope so, but मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है क्योंकि अभी तो मैंने बस सीखना शुरू किया है उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके फिर उन्होंने वहाँ पे पहुँची पर I just started learning so Good evening ladies and gentlemen, I am Tanya from News Nasha. My question is for Prarthana. Hi Prarthana, I am from News Nasha. So मेरा सवाल ये है कि जैसा आपने बताया कि आप अभी सिर्फ 17 साल की और जस्ट 17 और 17 साल की उम्र में आपने एक किताब लिखी अपने एज ग्रुप को आप इंस्पायर कर रहे हो. So how does it feel? कैसा महसूस होता है आपको? बहुत अच्छा महसूस होता है पर like I'm lucky to be surrounded by मेरे दोस्त भी जो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मतलब मेरी उम्र के भी बच्चे बहुत सारी कूल चीज़ें कर रहे हैं इस एज पे so I mean I'm proud of myself that I did it but there are a lot of other like-minded individuals around who are also achieving a lot of cool things like I look up to quite a lot of my friends because they are being able to do things that I am not so I think we are all unique in that way that we can all achieve different things but it is a good feeling to have done it at 17. Great, thank you very much. One more, yes please. One more question. Okay. And then after that, Hi, good evening everyone. First of all, congratulations to Prarthana for this book. And good evening to Sakshi once again. I am Amin Gupta. I am a founder of a fitness and a sports company. तो साक्षी जैसे कि यहाँ पर इतने पत्रकार मौजूद हैं मैं बस आपसे इतना पूछना चाहूँगा कि आपका इन सारे पत्रकारों के माध्यम से हमारे देश के लिए हमारे लोगों के लिए नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स और फिटनेस के लिए क्या मैसेज है? बिल्कुल स्पोर्ट्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट है नॉर्मल पीपल के लिए ज़रूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स करना देखो एथलीट्स के लिए तो ठीक है वो इतनी हार्ड वर्क करते हैं मैक्सिमम ट्रेनिंग तक करते हैं मैं भी कितने तरीके की ट्रेनिंग करती हूँ मुझे पावर ट्रेनिंग करनी पड़ती है फिट फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग करनी पड़ती है स्पीड स्ट्रेंथ काफ़ी सारी चीज़ें लेकिन जो नॉर्मल पीपल हैं उनको ज़रूर से भी ज़रूर अपनी लाइफ में अपने फिटनेस के लिए आप वॉकिंग करो योगा करो आप कुछ भी करो जॉगिंग करो कुछ भी करो लेकिन करो क्योंकि फिटनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर शरीर फिट होगा तो आप ज़रूर आपकी लाइफ में आधी से ज़्यादा सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो ही जीवन जीने का मजा है अभी दो सवाल और हम ले सकते हैं दिस देन हमारे संपादक उसके बाद पंकज जी Hey, first of all, congratulations, Prarthana. This is Neha from ABC. I just want to know कि what do you expect from your मतलब this book? आपने लिखा है एज ग्रुप के लिए कुछ सक्सेस तो out of this book, what do you expect from this book? I mean मैंने सिर्फ मेरी एज ग्रुप के लिए लिखा है आई थिंक ये बुक किसी के लिए भी है जो देखना चाहते हैं कि आजकल की यूथ कैसे सोचती है सो आई डोंट थिंक इट्स जस्ट फॉर माई एज ग्रुप बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं बिकॉज लाइक आई सेड मुझे मैंने अभी लाइक आई एम जस्ट स्टार्टिंग टू लर्न हाउ टू राइट आई वुड नॉट से दैट आई एम वेरी ग्रेट एट इट मैंने अभी मतलब this is my first big writing thing so I don't have many expectations from it but like I know I'll keep
writing and learning more and then do better. Okay, wait. No, just a follow-up question because I think you lost the answer in between. The question was, what आप क्या चाहते हैं इस book को achieve करना? So I think you have answered it earlier, but I want you to answer it again. जो आपने बोला था कि मैं जो सीखी हूँ वो मैं चाहती हूँ कि ये बुक से क्या मतलब आपकी इम्पैक्ट होना चाहिए? I mean, my idea while writing the book was just because I know I had the privilege of speaking and learning firsthand from a lot of people that I respect and look up to. So I just wanted to share my thoughts and learnings with others. Yeah, that was the point of writing it. हेलो, मेरा सवाल साक्षी जी से है। मैं पंकज शर्मा समाचार को मीडिया से। मैम, जैसे कि आप यूथ आइकन हैं, आपने ओलंपिक भी जीता, लेकिन जैसे होता है ना, एक सपना होता है तो वो आपका पूरा हुआ ओलंपिक में, लेकिन आपने बताया कि आपने काफ़ी हार्ड मेहनत करी और जब पहले आपका हवाई जहाज में बैठने का सपना था, फिर ओलंपिक में जीतने का सपना था, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए होंगे, तो कुछ ऐसा है मन में दबा रह गया कि काश ये और होता, या कुछ ऐसी इच्छा अधूरी रह गई जैसे पूरा करना चाहते हो किसी भी? नहीं सर, कोई और इच्छा नहीं है। बस अभी इच्छा तो यही है कि अभी रेसलिंग में ही मैं कुछ और मेडल्स दूँ, क्योंकि इतने साल हो गए रेसलिंग करते हुए, लगभग मुझे 18 साल हो गए रेसलिंग करते हुए, इतनी की तो प्रार्थना भी नहीं है। तो 18 साल से मैं लगातार कुश्ती कर रही हूँ, तो कुश्ती से इतना ज़्यादा मुझे प्रेम है कि बस मैं उसी को देना चाहती हूँ अपना टाइम अभी, और आगे मेरी करियर के बाद भी मैं चाहूँगी कि मैं रेसलिंग से जुड़ी रहूँ। हमारा खुद का अखाड़ा है, और मैं चाहती हूँ जो स्टार्टिंग में मेरी जो मैंने शुरुआत की थी, जो प्रॉब्लम मैंने फेस की, वो आने वाले बच्चों को फेस ना हो, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कंट्रीज़ में जाके मैंने देखा है, एक्सप्लोर किया है, क्या इक्विपमेंट्स हैं, किस चीज़ की हम इंडियंस को कमी है, क्या चीज़ और बेहतर हमें बना सकती है, तो वो सारी चीज़ मैं जो आने वाले यंग रेसलर्स हैं उनको देना चाहूँगी। बस यही है कि मैं रेसलिंग से ही जुड़ी रहूँगी। थैंक यू। Thank you. Okay. All right. Final question. Final. This is Tanmaya Das from the Sunday Guardian. My question is for Prarthana. So, do you see any sort of difference between your generation and millennials? I mean, I can only speak for my generation, but I think it's a lot more relevant because I think जो हमारे से आगे वाली generation है, उनके पास इतना freedom नहीं था to pursue exactly whatever you want, but luckily now I think thought process थोड़ा बदल गया है सबका, और no career option is like frowned upon, क्योंकि I think पहले जब हमारे से आगे वाली जो generation है, it used to be very restricted कि या तो आप डॉक्टर या इंजीनियर या लॉयर, ऐसी options, but I think now we have the freedom to choose what we want to pursue, so I think that's the difference I notice. चलिए एक और लास्ट। प्रार्थना, मैं सुधीर मिश्रा हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आपने कहा कि इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, मैं लॉयर हूँ, आप क्या आगे जो बुक्स लिखेंगी उसमें कोई एक पर्टिकुलर थिंग, जैसे आपने एम्बिशन की बात की कि हार्डवर्क की बात की, क्या नेक्स्ट होगा आपका? व्हाट विल बी योर नेक्स्ट फ्रंटियर और चैलेंज? I mean, personally, I read a lot. This is a non-fiction book, but I like to read fiction as well. But I think that's a very hard genre to write, even harder than non-fiction, because you have to pick up things that it's not realistic. So hopefully, I hope that at some point I have the skills to write a fiction book. But I think the next book I would like to write is it's a little similar, but like. The idea I have not really told this to anyone, but it was that the personal life, like a peek into the personal life and thoughts of a teenager, because this is from a very career, professional point of view, but I wanted to write the next one about like the personal experiences of being a teenager, and because but at the end of me turning 19. So That's clarity at this age. I think this is the last question. I want to ask you both, Sakshi and Prarthana. I cover religion a lot actually, and that's why Anurag sir has asked me one question. How spirituality play a role in both of your life actually? I mean, I think to me it's just like बचपन से हमारे घर में हमेशा, स्पेशली मेरी नानी ने हमें सिखाया है कि
मतलब भगवान जी से प्रे करना चाहिए, तो मैं बस लाइक सुबह उठ के I pray to God, I thank God, and I do the same before night because, but I think it's mainly it's instilled in me because of my grandmother, because she has always placed a big importance on it, and she is a big believer in God. A little reference, because now there's a notion we think like Gen Z didn't care about religion and faith and belief, that kind of thing. I mean, I don't think it's that much about religion because God is God, but I do pray to God and thank God for the life I have. बिल्कुल, मैंने भी जैसे बचपन से ही देखा है, जब पेरेंट्स हैं सुबह उठ के पूजा करते हैं। मेरे पापा आज भी सुबह उठ के 4 बजे सबसे पहले उनका काम होता है कि वो मंदिर में जोत लगाते हैं। तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि मैं नहीं रेगुलर पूजा करती हूँ। बस ठीक है, मंदिर चले गए, फैमिली के साथ चले गए, लेकिन मेरा मानना है कर्म ही पूजा है। जब मैं अपना रेसलिंग करने जाती हूँ ना, तो ये मान लो कि मैं मंदिर में जा रही हूँ। मेरा मानना वो है कि मैं अपना कर्म कर रही हूँ, मैं 4 घंटे प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैं वहाँ अपना ये मान लो मैं पूजा ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरा डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मेरा ध्यान उधर उधर नहीं जाता है, वो भगवान ही है मेरे लिए। तो बस मैं यही बताना चाहूँगी कि कर्म ही पूजा है, अपना काम ईमानदारी से करो, और भगवान तो हर चीज़ में, भगवान हर चीज़ में है। थैंक यू सो मच। एक बात तो क्लियर है कि जेन जी व्हाट वी थॉट कि वो सिर्फ नेटफ्लिक्स देखते हैं, वो सिर्फ बाकी चीज़ें, नो बट दे रीड आल्सो, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस entire conversation. Thank you Sakshi and thank you Prarthana for joining us.